So, for example, in this one, November 24, labor market का question है. It says wages in a perfectly competitive labor market will always be higher. ये always basically is your trigger word. जो evaluation के अंदर it has to be evaluated. And while you're writing your essay, you have to make sure कि बार बार you have to connect कि perfectly competitive market के अंदर जो है वो wages ज्यादा होती है monopsony के comparatively. They haven't mentioned in the question, what they've said is wages in a perfectly competitive labor market. Sometimes it's quite possible कि क्वेश्चन के अंदर वो तुमसे कहें कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताओ. तो आई वुड रेकमेंड कि आप वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड दोनों की बातें करें, तो आई थिंक दैट वुड बी अ रीजनेबल थिंग टू डू ऑल्सो. एटलीस्ट खास तौर पे अगर कोई क्वेश्चन वैसा आ जाता है तो उसके अंदर यू मस्ट मेक दैट कनेक्शन. So you have to connect कि wages in a perfectly competitive labor market will always be higher than wages. Analysis or evaluation, sorry, जो analysis or knowledge and understanding है, AO1 and AO2. For 14 marks, you have to agree with the question that yes, perfect competition will always be higher. And then in AO3, which is for 6 marks, उसके अंदर हमने काउंटर आर्ग्यू करना है. 6 out of 20 is a reasonable percentage. So make sure that you spend enough time. So with the help of a diagram, evaluate this statement. I think I can do like at least 3 diagrams in this one. I can think of um, एक चाहो तो एक डायग्राम में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोप्सनी दोनों दिखा सकते हो. और फिर इवैल्यूएशन के अंदर जब आप मिनिमम वेजेस और ट्रेड यूनियन और इलास्टिसिटी की बात करते हो, तो वहां पे यू कैन हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स. राइट, सो मेजरली जो है वो एक डायग्राम तो रिक्वायर्ड है इसके अंदर. So the first thing you want to start off with is कि एक perfectly competitive labor market की assumptions. All right. So the first thing you want to go is into the assumptions कि एक perfectly competitive labor market में wages किस तरह से determine होती हैं. तो पहले कुछ set standards कर लेते हैं. I will list them down. You have to write them in paragraphs. One of the major thing that we talk about in perfect competition is you must mention that there are many workers willing to work and plenty of um, employers, all right, in the economy. तो ये बात एक आपकी मस्ट है एक्सप्लेन करना. देन यू मस्ट एक्सप्लेन कि जो लेबर है वो आइडेंटिकल है, homogeneous है. Maybe you want to expand on this idea a little, that what you mean to say is that skills are the same for every individual worker. Their education, their skill, everything is exactly the same. तो थोड़ी सी expansion आप कर सकते हैं उस point के ऊपर. Other than that, you want to even suggest के workers की mobility, there is perfect mobility. इसके ऊपर आप expansion कर सकते हैं. जब mobility की बात करते हैं तो always talk about occupational and geographical. दोनों mobility is uh, assumed in our case, which means that workers are freely able to move between different kinds of jobs. You can give example that, a farmer can become an engineer and an engineer can become a farmer. कोई मसला नहीं है, and people can move between cities and countries. They have no problem whatsoever about, schooling of the kids and all of that. फिर उसके बाद we even say that जो firms होती हैं, firms are wage takers. आई थिंक इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड करूंगा. एंड लैक्स पावर
to influence wages. In fact, not only um, firms हो गई and workers also. यहाँ पे I think हमें we can sort of introduce that diagram. I would personally do that. I think I might have done this before also in the previous essay when we were doing the trade unions के साथ. So you can take a look at that one also. Wages and quantity of labor एक मैं market का बनाऊंगा और एक मैं individual firms का. So in a market, we're saying किस तरीके से demand and supply the sets the wages. ये मैंने अभी तक वैसे तो ऊपर राइटिंग उसमें नहीं लिखा अभी तक. इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए ये लिखूंगा. Demand for labor. And this is the number of workers being hired. This is the wage rate. और जो एक सिंगल फर्म होती है, right? Like we mentioned ऊपर, the single firm is the wage taker, supply, marginal cost, and the wage. And then based on their MRP curve for labor, this is what helps them determine how many workers they want to hire. अब इसकी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं डायग्राम की. इसके अंदर बहुत सारी आपकी बातें कंप्लीट हो जाएंगी. So for example, we could say like that in perfect competition, wages are determined by the interaction of market demand for labor and market supply of labor. I personally, I do mention not to a very large degree, but एक छोटा सा मैं जरूर यहाँ पे मेंशन पर्सनली करता हूँ कि किस तरीके से जैसे फर्म के लिए जो होता है, जो डिमांड फॉर लेबर है वो डिराइव होता है एमआरपी थ्योरी से. ठीक है, जहां पे हर एक्स्ट्रा लेबर जो आप हायर करते हो, हाउ मच रेवेन्यू डू दे जनरेट, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डिटर्मिनिंग द डिमांड कर्व. और फिर जो एक सिंगल फर्म होती है वो वेज रेट डिटर्मिन करती है, जहां एमआरपी इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट विच इज द वेज रेट. तो वो एक सिंगल फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. आई पर्सनली लाइक मेंशनिंग दैट बिकॉज जब ऊपर मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है, so then it's worth mentioning this particular point. So, like for example, I'll say that labor demand is derived, okay, um, from the MRP of labor. पहली दफा में पूरा लिखना चाहिए. ठीक है. Which shows um, the extra revenue gained from selling one extra unit, and something like a single firm will hire where MRP is equals to MC for labor, at QO or something like that. So I think that would be a good idea to do. ये आपका equilibrium point हो जाता है. This is where this happens. Um, I can do the diagram over here, or I can go into explanation of what monopsony is. I think that would be wise to do also.
आप चाहो बिल्कुल, इनफैक्ट ऊपर डायग्राम बना तो दिया है, तो देर इज नो नीड, एडिशनल नीड टू एनी ऑफ दैट। आप डायरेक्टली मोनोप्सिनी के अंदर जा सकते हैं। मोनोप्सिनी के केस के अंदर a few things that we have to definitely mention is that there is only one dominant employer and many workers. So plenty of people want to work in this industry, lekin there's only one firm that can hire. I think examples would be nice. हमने current के हिसाब से तो you have like it could be large remote mining company. अच्छा, वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर यू डू हैव लाइक द लार्ज ऑटोमोटिव सेक्टर एंड थिंग्स लाइक दैट। पूरे पूरे शहर के अंदर जो है एक लार्ज जीएम कंपनी है और या फोर्ड है, एंड देन एवरीवन इज मेजरली बेसिकली hired. So workers really don't have much options, alternative, and so automatically the power falls to the firms. ये मोनोप्सिनी की मेन बात है। फिर उसके बाद जो असल डिस्कशन आता है मोनोप्सिनी के केस के अंदर, इट्स द डायग्राम जिसके अंदर हम ये शो करते हैं कि सो लाइक मोनोप्सिनी के केस के अंदर वी से कि जो सिंगल फर्म का जो लेबर का जो सप्लाई कर्व है, सब लेब सॉरी सप्लाई फॉर लेबर, जो सप्लाई फॉर लेबर है वो एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर है, एंड इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, एंड देन वी डू मेंशन अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, इट इज इवन हायर। बेसिकली हम क्या बात करते हैं, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर is higher than the average cost of labor, which is equals to supply of labor, because in order to hire additional worker, um, all workers have to be paid more. So the marginal cost of labor is higher. Um, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो कि किस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट इज अ लिटिल ऑन द हायर साइड। आई थिंक दैट इट्स टाइम फॉर द डायग्राम। मैंने ऊपर परफेक्ट कंपटीशन का तो एक बनाया है, लेकिन मोनोप्सिनी का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो विल मेक श्योर कि मोनोप्सिनी के डायग्राम के अंदर हम परफेक्ट कंपटीशन को भी डेफिनेटली दिखाएं। This is their marginal revenue, this is their supply, yeah, average cost, and this is how the marginal cost looks like. So demand, yeah, MRP for labor, and this is the wage, this is the supply for labor, which is the same thing as average cost, and this is the marginal cost. And this is where a perfectly competitive firm would hire. Let's write QPC and WPC. This is the wage, एंड जो मोनोप्सिनी है वो एमआरपी इक्वल्स टू एमसी की बेसिस पे हायर करेगा और लोअर वेज ऑफर करेगा। सो यस, दे आर पेइंग लोअर वेजेस एंड दे आर हायरिंग फ्यूअर वर्कर्स। ये हमारे फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएगा। And this part will take you to level 3 when you make a comparison
दैट देखें, पहले तो आपने एक्सप्लेन करना है कि मोनोप्सनी किस बेसिस पे हाई रेट करेगा. So you got to suggest that, the monopsony will hire where M or P is equals to MC for labor at QM. ये basically profit maximizing level होता है, and pay WM. Under perfect competition, it is WPC and QPC, and this line is the most important one. Therefore, perfect competition has higher wage than monopsony. So something like this along this line. This is the final, your concluding sort of a situation जो पूरी इसकी explanation देगा. Obviously, you can do much deeper and better explanation of this, but this is the key idea that they want us to do. ठीक है, फिर उसके बाद जब हम evaluation side के ऊपर जाते हैं, I'm gonna need this diagram again a little later. Um, जब हम, I think that sort of like covers mainly everything इसके अंदर. Then when we come towards evaluation, because remember, let me bring this diagram and then let's talk in terms of this. So you know how we're saying कि देखा हमने कहा था ना, monopsony कम wage और कम hiring करती है as compared to perfect competition, but the idea is, will this always happen? तो हम evaluation के अंदर we have to discuss scenarios under which this will not happen, and maybe the wages can actually be a little more on the higher side comparatively. So, for example, the first thing we can talk in terms of evaluation is अगर किसी external force की वजह से the wages are not followed the way monopsony would do it. For example, in case of ट्रेड यूनियंस एक्सिस्टेंस, जिसको हम थ्योरी के अंदर, हमने लेक्चर्स के अंदर बायलैटरल मोनोप्सनी का नाम दिया है. तो फर्स्ट थिंग आई वुड स्लाइटली ब्रीफली मेंशन इज दैट ट्रेड यूनियंस का काम क्या होता है. ट्रेड यूनियंस का काम होता है टू negotiate a higher wage rate or a better working condition. I would write this, right? Better working condition through uh, bargaining power. ठीक है, because it's a group of members, a group of workers join hands, and then they want to, exercise their power through picketing and strikes and these sort of industrial power, basically. So trade union जो है, basically, if it comes and gets involved, तो फिर ये डायग्राम के अंदर ये WM वाला वेज नहीं अप्लाई होगा. Now, one thing that we want to talk about is in terms of the strength of the trade union. So first you have to define the trade union and their purpose. Okay. Uske baad, I can mention something like it's a if it's a strong trade union, so they can actually negotiate a wage rate which is higher than WM. In fact, it can be higher than WPC or equal to PC also. So this is what happens. This is the diagram you can make. If the trade union is strong enough to get the wage rate of the perfect competition, so that means यहाँ पे तो wage rate fix हो जाएगी. WPC के ऊपर wage rate will get fixed. So therefore, your new supply curve is this green one. First, it is perfectly elastic up to a point where QPC is hired. उसके बाद क्योंकि एवरेज वेज भी ऊपर जा रहा है, तो फिर ट्रेड यूनियंस भी कहेंगे कि फिर ठीक है, बियॉन्ड दैट पॉइंट वी नीड अ हायर वेज. लेकिन उससे पहले वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस वेजेस, वी वांट दिस एज मिनिमम. अब हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब आपका
सप्लाई कर्व जो है वो फिक्स हो गया तो आपकी फिर मार्जिनल कॉस्ट भी कुछ इस तरह से फिक्स हो जाती है, एंड देन यू हैव अ न्यू marginal cost curve, which looks sort of like this. So, under this scenario, जो ट्रेड यूनियन का वेज है वो इक्वल्स टू परफेक्ट कंपटीशन का वेज रेट हो जाएगा, एंड इवन monopsony will pay higher. इनफैक्ट अगर अगर ट्रेड यूनियन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, कितनी स्ट्रांग? लेट मी मेंशन how much strong I'm talking about. So I will remove this for a second. Okay. Now let's suppose ट्रेड यूनियन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो WPC से भी ऊपर की वेजेस मांगती है. Something along this line here. Now this is your new supply curve. If this is my new supply curve, then my marginal cost looks like this. I've done like full explanation of this in my lectures. You can go and see. एंड देन क्योंकि ये एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है तो ये एम आर इक्वल्स टू एम सी का रूल विल स्टिल फॉलो. तो दिस इज एम आर पी एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट राइट एट दिस पॉइंट. सो बेस्ड ऑन दिस द फर्म इज गोइंग टू हायर दिस मच ट्रेड यूनियन के साथ, एंड द वेज रेट दे आर बेसिकली गोइंग टू पे इज ये वाला ट्रेड यूनियन का वेज. तो अंडर दिस सिचुएशन, so what we'll write is that if the trade union is strong, they can actually negotiate a higher wage rate. So even the monopsony might have to pay a higher wage than perfect competition. असल ये comparison था, right? तो बच्चे जो अपने ऐसे की राइटिंग है उसके अंदर ये कंपैरिजन, ये एक्सप्लेनेशन छोड़ देते हैं जिसे इवैल्यूएशन का मार्क करता है, that the question is about that you have to evaluate whether the monopsony will always pay lesser. So we've just explained that under the situation when there is an external force and the trade union comes in, they can actually make the trade union pay more than even perfect competition, if not equal. Equal भी हो सकता है, more भी हो सकता है. However, if the trade union is not strong enough, तो फिर क्या होगा? सो अगर ट्रेड यूनियन वीक है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो ट्रेड यूनियन है उसकी वेजेस कैन एक्चुअली बी लेसर देन परफेक्ट कंपटीशन. सो आई एम सीइंग समथिंग अराउंड दिस रेंज कि अगर यूनियन वीक होगी तो दे माइट बी एबल टू गेट अ हायर वेज रेट कंपेयर टू द मोनोक्सिनी, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से तो अभी भी ऑन द लोअर साइड होगी. तो बेस्ड ऑन दैट है, दिस इज व्हाट विल हैपन. इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वेज का डिस्कशन मांगा है एंड नॉट द हायरिंग. तो इसी वजह से मैं ये क्वांटिटीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि हाउ मच विल बी हायर्ड मोर एंड हाउ मच विल बी हायर्ड लेस एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक हो गया? तो एक तो बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली आपको ये ट्रेड यूनियन को समझाना है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है. सेकेंडली व्हाट यू कैन ऑल्सो डू is external factors के अंदर you can introduce the second external factor, which is the government's national minimum wage. That is also an external one, part B of the external forces. National minimum wage. This is pele number one. You have to define what this is and what is the purpose of it. A brief intro, like a couple of lines maybe. कि ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है. इट इज टू प्रोटेक्ट द लीस्ट स्किल्ड वर्कर्स ताकि उनको एक रीजनेबल प्रोटेक्शन मिले ऑफ द वेज दैट कैन बी पेड. और फिर डायग्राम के अंदर आप एग्जैक्टली वही चीज कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने परफेक्ट कंपटीशन से ऊपर नेशनल मिनिमम वेज लगा दी तो फिर नेशनल मिनिमम वेज का डायग्राम जो बनता है वो एग्जैक्टली
ट्रेड यूनियन की तरह ही बनता है, लेकिन इसकी जो मार्किंग होती है वो नेशनल मिनिमम वेज की मार्किंग होगी, और ऑब्वियसली उसका कॉज वगैरह उस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन हाउ दे कैन एक्चुअली national minimum wage can actually force the monopsony to pay a higher wage than the perfect competition, which contradicts with the statement that we want to, you know, sort of like explain. So that would be an interesting discussion that you can also do. I think it's an important one that you have to do. ठीक है. Um, Another thing, like what I can talk about over here is, you know how when we say perfect competition, like for example, like on the other hand, something you can go around that. So on the other hand, wages in perfectly competitive labor markets may not remain high in the long run. जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ना कि मोनोप्सनी के अंदर जो है वो वेजेस कम है, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वेजेस ज्यादा है. तो हमें ये पता है कि अगर वेजेस ज्यादा होंगी, so naturally, what it will do is it's going to attract more workers, and it might actually increase the supply of labor. और फिर जब सप्लाई बढ़ती है तो हमें पता है कि वेज रेट्स जो हैं वो नीचे आते हैं. तो इवन इन अ परफेक्टली competitive markets, it is quite possible that actually the wages might fall, और वो monopsony की wage rate के करीब भी आ सकती है, if simply the supply of labor. Because remember, I think one of the things that we can actually also do जब हम perfect competition explain करते हैं ना इधर, I think it's not a bad idea to maybe like suggest something like कि मार्केट का वेज रेट्स परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई और डिमांड की वजह से चेंज होता है. सो फॉर एग्जांपल, इफ द सप्लाई इंक्रीजेस, the wage rates will fall, and then for a single firm, if the supply falls, that they might be interested in hiring extra workers. तो sort of like उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि मार्केट की वेज रेट्स किस तरह से चेंज होती हैं. तो यहां पर मैं उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट मोनोपोली आर दे ऑलवेज पेइंग लेसर than perfectly competitive market. So I just introduced a point where I said कि अगर perfect competition के अंदर higher wages की वजह से there is more attraction and workers come into the market, the supply increases, wages fall, and the gap between the monopsony and the uh, perfect competition might start to shrink. फिर उसके अलावा आई थिंक वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट how easily labor and capital can be substituted. We have learned that if the labor can be substituted easily with capital, तो supply for labor, sorry, जो demand for labor है वो elastic हो जाती है, because you can easily move them around, right? Um, and if they are not so easily replaceable, तो फिर उनकी डिमांड ज्यादा inelastic हो जाती है. inelastic के केस के अंदर they will be paid more, और elastic के केस के अंदर जो है obviously they will be paid relatively lesser. तो यू कैन ऐड दैट पॉइंट्स, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर नेशनल मिनिमम वेज का एक्सप्लेनेशन और ट्रेड यूनियन का एक्सप्लेनेशन विद लाइक रीजनेबल डायग्राम्स, that's good enough. But then remember, you have to always write a conclusion for your last one mark in your evaluation. So in our scenario over here, we can do evaluation like that. In conclusion, while economic theory suggests that wages in perfectly competitive labor markets are usually higher than those in monopsony labor market, but that is not always true, always covered, because ऊपर trigger किया था उसने. So we can say like government interventions through national minimum wage or the trade union activities can change can increase the monopsony's wage rate higher or equal to the wages in perfect competition. So this statement is not always accurate, or it's not always true.
तो इस तरीके से सर यू हमें मस्ट कंक्लूजन गिव योर फाइनल कंक्लूजन। या हमें कंक्लूजन लिखना चाहिए। कंक्लूजन इज तो ऑलवेज फाइनल। नेसेसरी। इवैल्यूएशन के अंदर देयर इज वन मार्क फॉर कंक्लूजन, यू मस्ट राइट अ कंक्लूजन आफ्टर इवैल्यूएशन, मस्ट है। आई थिंक इनकी मार्किंग स्कीम भी अगर हम देखें तो मार्किंग स्कीम में हमेशा मेंशन होता है इवैल्यूएशन के अंदर, या समथिंग। A conclusion should attempt to address each element of the statement. The key word always should be considered in the light of the question preceding argument. So जो तुमने वो पीछे arguments की हैं, um, उसको अच्छा यहाँ evaluation में अच्छे खासे points इन्होंने mention किए हैं. You don't have to do all of them. This is for guidance, but at least reasonable points होने चाहिए. Enough with reasonable details. ठीक. I feel minimum wages is a good one. Trade union is a good one, which makes a bilateral monopsony. Substitution की बात कर सकते हो. There's all sorts of ones. इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं. तो in this question यही एक मसला है कि इस question के अंदर जो analysis में I feel there is much lesser in analysis to write and there's much more to write in the evaluation. तो analysis के 14 marks को अचीव करने के लिए मेरे ख्याल में यू हैव टू गो इनटू अ लॉट मोर डिटेल्स, यू नो। अच्छा क्वेश्चन ये होता कि ये लोग मोनोप्सनी के साथ में भी लाइक ट्रेड यूनियन को भी मेंशन कर देते या कुछ एक और एडिट चीज होती तो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी। और 14 मार्क्स, these are easy 14 marks that they're giving actually. Level 2 maximum if no or incorrect diagram provided. So diagram is really, really important. Assumptions are always important. Basic definitions are important. And mainly the question that yes, they pay higher wages or lower wages. That is the key over here. So I think हमारा जो वो trade union वाला था उसमें there was still much more to write in comparison to this particular essay. So yeah, that is one of the essays. I think labor के अंदर these are the major ones that needed to be discussed. I'll see if there's any other question we can solve.